ज्ञान संस्कृत में है, संस्कृत आश्रित ग्रंथों में है, शास्त्रों में है। हम उनको पढ़ें, उनके ऊपर अनुसंधान करें। भारतवर्ष में भी अभी विविध विश्वविद्यालय और विविध संस्थानों के माध्यम से उसको व्यापक और जनसुलभ बनाने का जो प्रयास है, उसको हमें विश्व सुलभ बनाने के प्रयास के साथ में हमको कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि सब रोगों की, वैचारिक विकारों की कहीं से औषधि है तो मैं ये कह सकता हूँ कि वह संस्कृत है। इसीलिए संस्कृत की रक्षा हम संस्कृत के लिए नहीं, संस्कृत की रक्षा हम मानवता के लिए, मानव सभ्यता के लिए, मानव जीवन के संरक्षण के लिए करें। ये बहुत ज़रूरी है। इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। Donc tout d'abord, je présente mes excuses pour être en retard. J'étais pris dans les bouchons et on était arrivé un peu en retard pour cette réunion. Ce que je voulais dire, que la sanskrit, c'est l'âme de l'Inde en fait. C'est la l'âme de la culture indienne. Et tant que l'âme est là, la culture restera en vie. Et tant qu'il y a l'homme sur la terre et vivant, en tant que sanskrit restera aussi sur la terre. Donc il y a beaucoup de langues qui sont, je dirais presque toutes les langues du monde qui sont sanskrit et l'origine, soit directement ou indirectement, passant par le grec ou le latin. Très bon exemple, vous trouvez plein de mots qui sont exactement venus de sanskrit. Je vous donne 2-3 exemples. Par exemple, ananas, qui est un mot qui vient de sanskrit. Et quasi dans toutes les langues, le mot pour dire l'ananas, c'est ananas. Pareil, le mot genou en français, c'est aussi un mot de sanskrit pour dire ondijang, qui est l'origine du mot genou. Pour soi, en sanskrit, on dit swem, d'où vient le soi en sanskrit soi-même. Donc il y a beaucoup de mots où vous trouverez les racines sanskrit très présents en fait. Donc si on veut enrichir les langues et les cultures du monde, c'est très important de donner l'importance au sanskrit. Même le mot, aujourd'hui on parle de globalisation ou de mondialisation. En sanskrit, on a déjà dit le Vasudhaiva Kutumbakam, c'est-à-dire le monde est une famille. Donc ça a déjà donné le message qu'on ne doit pas regarder les pays par les frontières, mais le monde dans son ensemble comme une famille. Et puis aussi, en termes d'idéologie, je pense que la sanskrit résout des problèmes, aussi des divergences de pensée, les conflits. Donc si on veut résoudre les conflits, que ce soit des conflits des idées, mais également les maladies physiques en fait, parce qu'en sanskrit, la littérature sanskrit, il est très riche. Tous les premiers textes sur la médecine ou yoga ou d'autres bien-être de l'homme, on les trouve dans le sanskrit. Donc pour protéger la humanité, il faut protéger la sanskrit. C'est pas en soi que c'est un sujet, mais en protégeant cette langue, on va faire un grand service à la humanité. C'est tout. Yeah. Sanskrit has been the vehicle of thought and culture of Bharat. Sanskrit is the fountainhead of culture of Bharat, all-inclusive culture. And Sanskrit literature is the greatest treasure of Bharat, greatest treasure of knowledge systems. So, Sri Pierre Fayojeji and Srimati Vasundhara Payojeji has been teaching Sanskrit, has been propagating Sanskrit from Paris. They conduct a Sanskrit Divas program every year and they have been teaching. We would like to know how you have been preserving this Sanskrit tradition as a living language in Paris.
There is a difference between Sanskrit and other Indian languages. What is the difference? And what is special with Sanskrit? Sanskrit contains the whole of Indian culture, from Himalaya to the extreme south, to Cape Comorin. And Sanskrit has disseminated Indian culture, Indian religion, Indian science, Indian Dharma Shastra, Indian law in faraway countries, all countries of Southeast Asia, Tibet. It has gone even to Japan. This is the universality of Sanskrit. Sanskrit nowadays has some chances to become a universal object of study. When I started my Sanskrit studies in the 50s, at that time there were a world seminar of Sanskrit studies which was held in Paris, in Rome, in London, only in capitals of Europe, and of course in Delhi, the capital of India. On the first time, the first session of the World Conference, there were maybe 5 countries which were represented, a part of India. That was England, Germany, France, Italy, chiefly, maybe 1 Russian. A few years ago, there was in 2012, if my memory is good, there was a World Sanskrit seminar in Delhi. There were maybe 1,200 delegates, and there were 30 countries which were represented, 30 countries of the world. So there is an interest for Sanskrit language and for Sanskrit culture. So why Sanskrit books of culture have been disseminated and raise such interest? In my view, it is because Sanskrit is a language of Shastris. There are a few disciplines which are called Shastra. There are Vyakarana, Mimamsa, and Nyaya, with a special school for Navyanyaya. These Shastras are unique in Sanskrit. There is no Shastras equal to what has been developed in Sanskrit language in any other Indian language. There are other Shastras than the 3 main ones. The characteristic of the Shastra is it is purely rational. It is using the human brain. And I feel it is to the honor of, and I wish to pay homage to the power of Indian brains of Pandits, of Sanskrit Pandits, to have done such wonderful rational constructions with their brain work in the field of linguistics, in the field of logics, and I may add also in the field of mathematics and astronomy. We can add also a few minor Shastras. They are very numerous. And everything which human mind has touched has been expressed in Sanskrit, and very often in Sanskrit verse. I can demonstrate that India has been in advance in mathematics, and I must say that it is found in Sanskrit treatises all throughout the history of mathematics, up to the 18th century.
there was a change, a decline, when there was a huge boom of mathematical discovery in 19th century in Europe. And India has followed the boom and participated in it. This is possible. This is the speciality of Sanskrit. Without a Sanskrit Pandit, there will be no more Sanskrit. It is good to speak currently Sanskrit. You can go to a market and ask your vegetables in Sanskrit. If I do it, people will answer to me in English, not in Sanskrit. That is the situation. But we can also ask and buy our vegetables in different languages, in other languages, in all vernaculars of Sanskrit. That will be successful equally. We will not fail with Sanskrit, but this is not the speciality of the language. I maintain the speciality of Sanskrit are the Shastras. And we can preserve Sanskrit in usage, in common usage. We're speaking currently, chatting in Sanskrit, but we have also to study the Shastras. Okay, you explain very well. I think the time is so limited. Thank you. Sorry if I am too long. वसुंधरा जी से मैं वसुंधरा जी से आग्रह करता हूं कि वो संस्कृत के संबंध में 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें. Just I will tell you that by and large in Europe, they think that Sanskrit is a dead language. It was never a dead language, and my father, who was a Sanskrit scholar, he said that he or she who says that Sanskrit is a dead language, that shows his maximum of stupidity. It's not correct to say that a language is a dead language. It's not like Greek and Latin here. Sanskrit is always a living language. And Sanskrit was always taught, it was never Shasgyarde. It was never a specialty of, it was not restricted only for Brahmins. Others were also knowing Sanskrit. And if you see the sculptures in the temples, which are influenced by Sanskrit literature and all that, and if you read the inscription, I'm an epigraphist, so I'm very much influenced by the inscriptions in the temples. And those inscriptions which were drafted by non-Brahmins, but such a high language is there, and so many Sanskrit words are there, and sometimes it's very difficult to get the meaning of those words, because they have searched for rare meanings in the dictionaries, and they have used such terms. That means Sanskrit was never a dead language, and it was never restricted only for Brahmins. And now come to the France here. I started teaching Sanskrit privately, because I'm a freelance. I started teaching Sanskrit, and I saw that where the French people find little difficult Sanskrit, because in the university they say that Sanskrit is a hard nut. It is difficult to crack it. Those who say it is a hard nut, they must be a big nuts to say that, because Sanskrit is not a hard nut. It is, we can make it easy by teaching Sanskrit Subhashitas and some shlokas, and then make it easy, and then give an appetite for learning more and more Sanskrit to the students. You should do that one, instead of saying that it is hard nut, and immediately if you take Panini's grammar and start explaining, even the person who explains, I don't think, must have understood something. So, and now to tell you how the Sanskrit is appreciated in France here, in 2012, I had an idea, brilliant, very funny idea, that I should start doing this Sanskrit Day in France. And when I told some of my friends that we will do it, some of them encouraged me, and some of them described, oh, you will not have even 25, 30 people in the hall. Then I got vexed. I said, no, even if there is one person, I will do it. And I started working in that direction. And first year, believe it or not, where there was 75 people in the hall.
They were not all Sanskritis, but Sanskrit lovers, Indian culture lovers, and those who were doing yoga and Ayurveda and these things. So the Sanskrit means it is not just going to the university and study something. It is everywhere. Sanskrit, our Sanskrit is everywhere, and you can study Sanskrit even by going to the temple, seeing those cultures, or seeing those architecture. So Sanskrit is everywhere. And now, in 2020, I was to celebrate, the 10th year of Sanskrit Day, Sanskrit Divasa, but unfortunately because of this corona, we could वसुंधरा not जी, do मैं it. आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया और आपने अपनी जो बात बताई कि संस्कृति के हर एक क्षेत्र में जो है व्याप्त है वसुंधरा जी, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे वक्ता और भी हैं, तो हम थोड़ा सा उसकी तरफ रुखसत कर लेते हैं। बालकृष्ण जी ने संस्कृत और संस्कृति के संबंधों को बहुत गहरे से व्याख्यायित किया, चमू कृष्ण शास्त्री जी ने संस्कृत के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा, मैं चूँकि पैनल डिस्कशन भाषाओं, भारतीय भाषाओं पे केंद्रित है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कृत जो है, जिस तरह से कलाओं के इंटररिलेशन बिटवीन आर्ट होता है, उसी तरह से तमाम जो भाषाएं जो है उसमें एक तरह से संस्कृत व्याप्त है, और इस रूप में भी व्याप्त उसको देख सकते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ये जो दो प्रमुख ऐसे ग्रंथ हैं जिन पे तमाम जो हमारी कलाएं हैं एक प्रकार से वो उद्घाटित हुई एक प्रकार से, और उनकी पूरी अगर वोक्यूबलरी, उनके सारा शब्दकोश अगर देखें तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और विष्णु धर्मोत्तर पुराण से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है ऋषि मार्कंडेय और राजा वज्र के बारे में। ऋषि मार्कंडेय से राजा वज्र संवाद करते हैं कि मैं एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ, मंदिर में स्थापित करना चाहता हूँ। राजा ऋषि मार्कंडेय कहते हैं वज्र को कि इसके लिए संगीत का ज्ञान जरूरी है। वो कहते हैं ठीक है, आप संगीत सिखा दीजिए। तो कहते हैं संगीत के लिए नृत्य का ज्ञान जरूरी है। बोले ठीक है, नृत्य सिखा दीजिए। बोले नृत्य के लिए शिल्प का ज्ञान जरूरी है। बोले शिल्प सिखा दीजिए, उसके लिए आतोद्य यानी वाद्य यंत्र का ज्ञान जरूरी है। और इस तरह से संवाद चलता है, लेकिन उसका मूल संवाद का यह है कि हर कला दूसरे में घुलकर ही पूर्णता को प्राप्त करती है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरलेशन आर्ट, दिस इज द इंटरलेशन आर्ट। सो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को भी आप देखें तो उसका बड़ा सुंदर उसमें है कि पहले नटों का शास्त्र भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को कहा गया था, और बाद में जब ब्रह्मा और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र सृजित कर लिया तो शिव के पास पहुंचते हैं वो, और शिव से उसका दिखाते हैं, उसको नाट्य जो मन किया गया उन्होंने रचा है उसको। शिव उसको कहते हैं कि नहीं, आपने नाट्य तो बहुत अच्छा रचा है, लेकिन इसमें कुछ शेष रह गया है, मैं उसको पूर्ण कर देता हूँ। और वो फिर कहते हैं कि मैं नृत्य करता हूँ, उसको आप इसमें नाट्य शास्त्र में डाल दीजिए। और उसके बाद शिव तांडव नृत्य करते हैं, और बहुत सारे अंगहार जो है, जो नृत्य के जो होते हैं, उस अंगहारों को सम्मिलित करते हैं। तब ऋषि प्रश्न करते हैं कि नाट्य में नृत्य का प्रवेश कैसे होगा, और तब उसका समाधान शिव करते हैं कि नृत्य शोभा है। कालिदास ने भी इसको वर्णित किया है, और अभिनव गुप्त ने जो व्याख्या की है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की, उसमें खास तौर से शोभा शब्द का उपयोग उन्होंने किया है, और ये कहा है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सर्व शिल्प प्रवर्तकम है, यानी सभी कलाएं जो है, सभी जो शिल्प हैं, उसका पूर्णता जो है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में होती है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अलग से किसी और कला को देखा नहीं जा सकता। बहरहाल मित्रों, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं सम्मिलित है देश की जो है, वो सभी भाषाएं किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई है। और बल्कि मैं यूं भी कहूँगा कि आज भी जितने यहाँ पर स्टॉल जो लगे हुए हैं लेखकों के भी, उन सब का भी आधार कहीं न कहीं संस्कृत रहा है। उर्दू भाषा कैसे बनी आप सभी जानते हैं कि छावनियाँ हुआ करती थी किसी ज़माने में जो है, और उस छावनी पे खरीदारी करने के लिए लोग आया करते थे वहाँ पर, और जो लोग आके जिस तरह की भाषा का व्यवहार करते थे वही भाषा बाद में उर्दू के रूप में स्थापित हुई। जो आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि मुंबई में जैसे अलग हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में अलग बोली जाती है, राजस्थान में अलग हिंदी बोली जाती है, ठीक वैसे ही उर्दू भाषा बनी। और ऐसे ही बहुत सारी और भाषाएं जो निरंतर बनती रही है। नई शिक्षा नीति में खास तौर से सभी भाषाओं को महत्व देते हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गिजू भाई एक बात कहते थे कि भाषा ऐसी होनी जिससे चित्त शिक्षित हो और मन सर्जक बने।
तो उस रूप में अगर भाषाओं को हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि भाषाओं के वैविध्य का भंडार भारत देश है और बहुत सारी भाषाओं, आपने पीछे भी आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी भाषाओं के मेल से जो है हिंदी बनी है और बहुत सारी भाषाओं के मेल में बहुत बड़ा योगदान संस्कृत का रहा है। नई शिक्षा नीति के 4.17 जो अनुभाग, उसमें भारत की शास्त्रीय भाषाओं सहित संस्कृत पर विशेष ध्यान दिया गया है और भाषा जो है जीवन से कैसे जुड़ती है उसको हम भारतीय जनजीवन में भी बहुत गहरे से उसको हम अनुभूत कर सकते हैं। भाषाई जो वैविध्य है हिंदुस्तान का जो है उसको 64 कलाओं में खास तौर से हम लोग महसूस करते हैं और जितने भी, चाहे वो वाल्मीकि की जो रामायण रची गई है या महाभारत जो रचा गया है, उन सब में मूल जो है संस्कृति रही है और उसके बाद में उसके अनुवाद हुए हैं। तो मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ ओके तो मैं गौरव दास से आग्रह करूंगा कि वो जो है कैसे भाषाओं की विविधता को जो किस रूप में देखते हैं थोड़ा सा उसको व्याख्यायित करें। Thank you. I think a couple of things have been jumbled up in this session. So, in fact, I was listening to Acharya ji. At the outset, I would like to. Ji? अच्छा. संक्षेप में बताता हूँ. Donc on a parlé de sanskrit tout à l'heure. En fait, donc le sanskrit, il y a beaucoup d'importance, notamment qu'on voit tous les arts. En fait, sanskrit le relie. En fait, dans la mythologie, si vous regardez le discours entre Brahma et Shiva, quand ils ont étudié la science de théâtre, et donc ils ont allé voir le Shiva, et Shiva dit c'est incomplet parce que la danse n'est pas là-dedans. Du coup, Shiva il a dit je vous montre en fait la danse, et donc Shiva il a fait la danse qu'on appelle la Tandava, donc c'était la danse sur ce Tandava qui est basée toute la théorie et la science de la danse indienne. Donc c'est comme ça qu'on voit qu'il y a différents éléments de l'art qui, c'est grâce à sanskrit qu'aujourd'hui on a, si on lit tous les Puranas et Shastras, on trouve les éléments de l'art qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Mais si on revient dans les langues indiennes, selon la constitution indienne, il y a 22 langues qui sont reconnues comme on appelle les langues officielles. Donc chaque État peut choisir sa langue officielle. Après, chaque langue a une histoire. Si je vous donne l'exemple de Urdu, cette langue était développée dans les casernes en fait. C'était les soldats qui parlaient entre eux avec une forme de langue qui est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui Urdu. Mais quand on regarde Hindi, c'est très différent d'une région à l'autre. Donc chaque langue indienne évolue différemment, et comme vous voyez derrière nous, il y a toutes les écritures qui sont des langues différentes indiennes. Donc chaque langue a sa place dans l'Inde d'aujourd'hui, mais c'est sanskrit qui relie toutes ces langues parce qu'on trouve des racines de sanskrit dans toutes les langues indiennes. Donc voilà, en résumé, ce que M. a dit. Now I will request Professor Gaurihara Das ji to speak on India's linguistic traditions, though briefly, sir. Friends, India has more than 5,000 languages, out of which only 24 languages has been recognized by Sahitya Academy. In a nutshell, we can say that we have a problem of plenty. That is the problem. But it is a long tradition. Shastri ji bata rahe the, he was talking that Sanskrit, it has come from the mouth of Brahma. That's another part of the story. Like Sanskrit, there are also other languages which has a very rich heritage. India government has recognized 6 languages as classical languages of India. They are 4 southern Indian languages like Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada, and my language Odia and Sanskrit. So sometimes Sanskrit is also associated with so many things. Most of the people, they think that Sanskrit is only about religion, more about Hinduism. But as Acharya was talking, it has also something to do with politics, with health and science.
You must be knowing there was Chanakya, who was like a Machiavelli, who was a very famous political scientist. So also, all these classical languages, they have a strong heritage. They have a heritage of legacy of more than 2,500 years old. It has a, so these languages are vibrant, they are not dead, they are not extinct. Some of the languages, because when I said that we have a problem plenty, let me share with you one, it's on lighter vein. Each year, Swedish Academy, he sends a letter to Government of India to choose one book, Indian book, which should get the Nobel Prize. It comes eventually to Sahitya Academy and does not come the second time because we have a problem plenty. We don't decide which language is the Indian language, whether Tamil language, which is Malayalam language or Bengali language, or it is very easy in France because we see everything in French. But if you go to India, you will be lost in a forest. So that is, but there is also, Shastri is always telling us, harping on that side, unity in diversity. We have Rama and Krishna, we have two deities. They connect India from east to west and north to south. I think I don't have much time to elaborate on this because there are other members of panel. But in a nutshell, I would say that India has a long tradition of this language, both spoken and written, and Sanskrit also included. Sanskrit is not a dead language. It's very much there, and like all other languages, there are also some tribal languages. Government of India now recognize some Kosari language, Santali languages, some languages are there. So we have a strong tradition of language, and I think Government of India also going in the right direction, and new education policy. Now the Government of India is formulating, also giving much importance to Sanskrit as well to other languages of India. Thank you. Now I request Mr. Ian Nandakumar to speak on India's linguistic traditions. Respected distinguished guests and other friends. The specialty of... Then we will have questions. Brief. Yeah. I can say within 3 or 4 minutes I can finish. The speciality of today is that today is the World Book Day. In 1996, United Nations announced as the Book Day, but the speciality of the Bharat, India is known as the knowledge. India has always been a knowledge society. In my own state, in Kerala, we are celebrating the book week, book months. For the last 1 century, we are celebrating that. Each and every home in a particular month, we are reading in a particular book named Ramayana, written by the Tunjathu Ramanujan. That was done for the last 1 century, it has done. Not only that, the speciality of the Indian languages, almost all the languages are interlinked. For example, in Malayalam, out of the Malayalam languages, more than 30% of the Malayalam words are Sanskrit words. So even the Chammu Krishna will speak in Sanskrit. As a Malayali, I can understand what he is saying. Around 40% of the Malayalam words, they are related to Tamil. So a Malayali people can understand Tamil, Sanskrit, and other Indian languages because almost all the Indian languages that are all linked. Another main point is that the Indian language tradition, linguistic tradition, that is the oral tradition. Because of the printing has came only 2-3 centuries back only. Before that, hundreds of thousands of years back. For the Ramayana, it comes nearly 24,000 slogas for Ramayana. This Ramayana came into the new generation that is sound by orally it came. 24,000. We can understand the new generation, and another thing is that Sriman V.D. Savarkar, he was in Andaman jail. He wrote a book about the 1857 independence war. That book was written, that is in the jail wall. With the black chalk, he wrote the book, not in paper. That means the oral tradition of the India, it was very remarkable contribution to the Indian knowledge system.
Actually, the Indian knowledge tradition is also continuous. India exported knowledge to the various parts of the world. Like just to be told that so many Indians are going abroad, they're discussing about with various subjects. We are expecting that we can spread the language there. The classification of the Indian literature, there is a main factor. Another main factor is almost in India, literature comes by Kavya. Even the Ramayana came as the Kavya. Mekha Sandesham came as the Kavya. Everybody the Kavya as vehicle of a Shastra. Another concept is the concept of self in our linguistic traditions. Self is one of the main, I am not detailing about this thing, even though we can also, that is a main factor in our concept. Language not in India, Bharat, language is not just as a medium of conveying knowledge. Actually, the language means, but was treated as a primary science actually we are considering. We can talk in any language we can talk, but we are not considering that is only a conveying language. In my thoughts, my things, I am presenting of the 9 points within the limit of this time. I am presenting on the points only I am presenting. Thank you very much. Now, may I request Mr. Sudeep Nagarkar? Good evening, everybody. So we have been hearing like how Sanskrit is rooted in Indian culture, and we have been also hearing about the glory of linguistic tradition. But I want to talk about like what we can do to enhance it further. And that's where I think that India needs to restore its linguistic tradition, and not in the form or the way it is. And by doing that, we'll get two things. First, by bringing alive the Vedic culture and blending it with today's contemporary Indian literature, we can bring alive the roots that can give direction to the entire civilization. And second, the mother religion will be awakened, because without religion, without languages, the civilization will cease to exist. But then if we are giving these ancient knowledges about this linguistic tradition the way they are, it's not going to work. The reason I'll tell you is very simple. There is a vegetarian food called tofu. For someone who is unaware, if I tell him that you want to eat it or not, he's going to say, I don't want to eat it, just by listening to the name. That's how complex the languages are. That's how complex the Indian knowledges, the ancient knowledges are. Just by listening to it, you are not going to understand it. And if I tell you that tofu is protein rich, then it's like, what am I supposed to do with it? It has to taste delicious. If the food is delicious, I am going to eat it. Otherwise, I don't care about whether it's protein rich, it has calcium, it has whatever it is. So that is how the ancient languages are. It has to come out in the story format. It has to come out through literature, through movies, through books, or whatever it is. But then that's how we can regain and bring alive this linguistic tradition and the ancient knowledges that India has. And that's what I wanted to say. Thank you so much. समय के अभाव से you want to ask question? I think just one question we will take, because one or two questions. Thank you. First of all, I want to say I don't want to reduce Indian culture to yoga, of course, but I'm listening to you this afternoon. Sorry, it's difficult to speak, hearing your voice. There's a delay, it's complicated. I'm listening to your conference today because I am practicing yoga, and I want to share here the joy that's bringing to sing mantra in a language I don't even know about. And I just want to share this. When you sing mantras in Gurmukhi or Sanskrit, which is not my language at all, I can tell you, you feel few things, and well, how could I say? I am also interested in knowing the link with mathematics you spoke about, sir.
And I've discovered few things today listening to you all, and I wanted to thank you very much. And for many yoga practitioners in France, I can tell you Sanskrit is a very living language. Thank you to all. So now we'll conclude since time is over. सभी अंत में मैं एक बात सबसे निवेदन करना चाहता हूँ. भाषाएं अनेक भाव एक, कल हम चर्चा किए थे. भाषाओं का अलग अलग विभाग करके देश का और समाज का विभाग किया गया. ये नहीं होना चाहिए. भाषा, सभी भारतीय भाषाओं का एक ही परिवार है, अलग अलग परिवार नहीं है. ये एक हमको समझना चाहिए. अनादिकाल से अब तक हजारों सालों से भारत ऐसा ही था. सभी एक भाषा परिवार के रूप में था. और दक्षिण से रामेश्वरम से पशुपतिनाथ तक यात्रा करते समय अनुवाद कोई नहीं करता था. काशी से रामेश्वरम तक यात्रा करते समय अनुवाद की व्यवस्था नहीं थी. सभी अपनी अपनी भाषा में बोलते थे. देश में सभी समझते थे, पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक. तो एक भाषा परिवार के थे. एक भाषा माने अलग अलग बोलियां थी, लेकिन सब आपस में समझते थे. तो इस प्रकार एक देश में अनेक बोलियां थी. सब मिलके हम जीवन यात्रा किए हैं. आगे भी इसी प्रकार का भाषा के माध्यम से लोगों को एकत्रित करने का काम हमें एक सूत्र में बांधने का काम करना है. भाषा समरसता का, सामरस्य का साधन बनना चाहिए. विरसता का, विघटन का साधन नहीं करना चाहिए. भारत को फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत करने में सभी भारतीय भाषाओं का बहुत योगदान होगा. और उस प्रकार के साधन के रूप में भाषा का प्रयोग होना चाहिए. बस इतना निवेदन करके भारतीय भाषा परंपरा जो है वो एक परंपरा है. वो भारतीय भाषा परंपरा के नमन करते हुए इस सत्र को समाप्त कर रहे हैं. और सभी वाग्मियों का मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं. Donc, je voudrais souligner qu'en fait, le but des langues, c'est pas diviser les pays ou les sociétés. En fait, toutes les langues peuvent coexister. C'est comme dans une famille, en fait, on peut parler différentes façons, mais on peut rester ensemble. Et dans les temps anciens, en fait, les gens, ils parlaient différentes langues, ils voyageaient du nord au sud, de l'est au ouest. Personne traduisait d'une langue à l'autre, ils se comprenaient, malgré le fait qu'ils parlaient des langues, parfois les dialectes différents. Donc pour l'avenir, le message que je souhaite passer, c'est qu'on peut coexister en parlant différentes langues, et ça doit renforcer notre identité culturelle en tant qu'un pays, et pas diviser dans différents groupes linguistiques qui se voient comme un conflit entre différentes langues. Donc c'était notre tradition, et ça doit être notre tradition pour l'avenir. धन्यवाद सभी को. सभी नंद कुमार जी. हाँ फोटो के लिए. Yes, ready please. Yes, ready. 1, 2, 3. Okay. Yes. Okay.